Hello guys, I am Shubham from ShubhVed Tutorials. This video is about oxidative phosphorylation. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from our side, but it will help us grow. Previously we have discussed glycolysis, right, and citric acid cycle or Krebs cycle in detail, right. अभी ये जो कैटाबॉलिज्म के पाथवेज होते हैं, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस है. But not only this carbohydrate part, glucose, but also amino acid catabolism, fatty acid catabolism gives rise to acetyl-CoA. And then acetyl-CoA citric acid cycle में oxidize होके the next step is the oxidative phosphorylation, okay, which is step 3, right? So this video is about this whole process, okay. तो यहाँ पे क्या होता है, there is a electron transfer system, okay. I will tell you. Oxidative phosphorylation में 2 pathways है. First is ETC, Electron Transfer Chain, right, जहाँ पे electrons transfer होते हैं. Okay, basically there are various carriers involved in this process जो electrons को transfer करते हैं, and this gives rise to a gradient basically. Okay, gradient. That gradient will do the next step, that is chemiosmosis. Okay, so basically chemiosmosis is what? ATP synthesis. Got it? अभी क्या है? I will show you with the help of diagram. Let's see. This is a mitochondria. Okay, mitochondria. This is outer membrane, right? Outer membrane. Then this is inner membrane. Okay, inner membrane. And ये दोनों के जो बीच में space है, that is intermembrane space, IMS. And जो अंदर है, that is matrix. Okay, अभी क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और प्रोटॉन्स जो है H प्लस इज रिलीज इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, राइट. मैट्रिक्स से बाहर आता है H प्लस, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस इज मोर. ओके, H प्लस इज बेसिकली प्रोटॉन्स, राइट. तो जो ये है ना फर्स्ट स्टेप जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, दिस गिव्स राइज टू दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट. ओके, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, मीन्स डिफरेंस इन द प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, राइट. प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन higher in the intermembrane space and lower in the matrix. Okay, matrix में कम है and IMS में there is high amount. This gives rise to proton gradient. अभी ये proton gradient is a important for ATP synthesis. Okay, chemiosmotic theory which gives rise to ATP synthesis. ATP synthesis basically क्या होता है, अभी ये बाहर बहुत है ना protons, this will again come inside then, and this will, when this will come inside H plus, this will give rise to ATP formation. Okay,
तो ये जो स्टेप हमने डिस्कस किया, दिस स्टेप, these arrows where protons are pumped outside, this is involved in ETC, right? And this, ये जो है pathway, this is involved in chemiosmotic theory. Means what? Chemiosmosis, right? This is a basic idea, basically summary है. Now let's see in detail. Do note, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं. ओके, रेस्पिरेटरी चेन बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है. ETC, electron transfer and oxidative phosphorylation. So in this process, जो लास्ट एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का, that is oxygen, right? Oxygen is a terminal electron acceptor. Okay, and that gives rise to water. You can see here. Got it? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है. Read by your side. Got it? Now basically this step or process, जो ये पाथवे है, इसमें 5 एंजाइम्स हैं. ओके, 5 एंजाइम्स. बट जो ये फर्स्ट स्टेप है ना, ETC, also called as, I will write here, respiratory chain. Okay, respiratory chain. See, the protein components of the mitochondrial respiratory chain. So basically enzyme, complex or protein. जो complex one है, that is NADH dehydrogenase. Okay, इसका ये भी है mass, number of subunits. And prosthetic groups. Prosthetic groups important है, right? FMN, iron sulfur, prosthetic group है. जो कॉम्प्लेक्स 2 है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. ओके, ये एंजाइम्स हमने पहले भी एनकाउंटर किए इन द क्रेब्स साइकिल, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, राइट? इसके प्रोस्टैटिक ग्रुप है FAD, FES. देन कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज. ओके, प्रोस्टैटिक ग्रुप हीम्स एंड आयरन सल्फर अगेन. कॉम्प्लेक्स 3 का ही साइटोक्रोम C है, राइट? साइटोक्रोम का सिर्फ प्रोस्टैटिक ग्रुप हीम है. देन कॉम्प्लेक्स 4 cytochrome oxidase, right? Again heme है, then copper है, CuA and CuB ions. Then what are the things written? Let's understand. Number of subunits in bacterial complexes is shown in parentheses. Mass and subunit data are for the monomeric form, right? This is for the monomeric form. Cytochrome C is not part of an enzyme complex. See, do note, it moves between complex 3 and complex 4 as a freely soluble protein. जो cytochrome C है, that is not part of a enzyme complex, freely moving है in the membrane. It is a soluble protein. Do note, ये जो pathway है ना, बहुत complex है, but we will see the things that are important from a exam perspective, right? From where large number of questions are asked, basically, right? The repeated questions. So this is an important topic. Okay, don't ignore all the things that are important. I will be telling you in this single video. Now, इसमें ये आपको complex जो enzymes है important है of the mitochondrial respiratory chain, right? जो part 1 है, electron transfer
सिस्टम। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें एटीपी सिंथेज, बस एक एडिशनल एंजाइम, also known as complex 5, which is involved in ATP synthesis after electron transfer chain or respiratory chain. So now let's see the pathway. See, this is a pathway hole. Okay, this is a complex 1. You can see here NADH से NAD बन रहा है और ये जो H है that is getting basically transferred electron and proton. Okay, so basically ये carriers है. What are the carriers? There are carriers NAD, FAD, FMN, राइट, जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ट्रांसफर करते हैं, कैरी करते हैं, रिलीज करते हैं, कैरी करते हैं, रिलीज करते हैं, ऐसा फ्रॉम वन टू अनदर. बेसिकली these are the flavoprotein, flavine adenine dinucleotide, flavine mononucleotide, right? Then there are cytochromes. Okay, then iron sulfur proteins. Then what? Ubiquinone is there, one important thing. Ubiquinone. Basically, this is called coenzyme Q. Okay, about ubiquinone, first the form is like this. This is when it is not having anything. When it get 1 H plus, this is known as semi-ubiquinone. Semi-ubiquinone. And after this, it will form like this. So this is called ubiquinol. Okay, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ऐसा सब चलता है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स 1 में NADH डिहाइड्रोजनेज है जो NADH से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. ओके, देन दिस गोज टू Q. You can see here QH2 is formed, राइट? और यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं into the intermembrane space, right? See, in this diagram also you can see much more clearly. Complex 1 में क्या हो रहा है? NADH plus H plus से NAD बन रहा है, and then this is getting transferred to FMN, then iron sulfur protein complex. Okay, also 4H plus are released, right? From iron sulfur it goes to this ubiquinone. The Q है, that is coenzyme Q, ubiquinone. अभी क्या हो रहा है देखो. See, as we discussed, cytochrome C freely moving है, so this is how it is associated in the pathway. You can see here also cytochrome C. Okay, now complex 2 के पास गया. कॉम्प्लेक्स 2 क्या कर रहा है? सक्सिनेट का फ्यूमरेट. क्रेब्स साइकिल में देखा है हमने. एंजाइम इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. अगेन हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड and it goes to coenzyme Q, ubiquinone basically, right? Then यहाँ पे Q cycle चलता है. You can see here same diagrams, right? Q cycle यहाँ पे जो ये सब दिखा रहा है ना, यहाँ पे Q cycle, this is related to complex 3. तो complex 2 में बस इतना ही है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से हाइड्रोजन रिमूव होगा, it goes to coenzyme Q. Okay,
तो 1 से भी Q के पास आ रहा है एंड कॉम्प्लेक्स 2 से भी Q के पास आ रहा है. ओनली जस्ट रिमेंबर जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसमें ये प्रोटॉन्स बाहर रिलीज हो रहे हैं, 4 प्रोटॉन. नाउ कॉम्प्लेक्स 3. Complex 3 is what? Ubiquinone cytochrome C oxidoreductase. Okay, oxidoreductase means what? Oxidation reduction दोनों होगा. Now what happens? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q से आ रहे हैं, राइट, यूबिक्विनोन से आ रहे हैं. इट गोज टू फर्स्ट एंड सल्फर, ऑल्सो cytochrome Bl, okay, Bl, then BH. Basically this L and S stands for low potential, high potential, right? Then iron sulfur protein complex and cytochrome C is the last one, right? And complex 3 से भी 4 electrons, protons are pumped outside. Then complex 4 is last one, which is having cytochrome oxidase. Okay, cytochrome oxidase activity उसका नाम है cytochrome oxidase, जो ऑक्सीडेशन करेगा बेसिकली. Here also what happens? साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास जाता है and then from that C it comes to this copper ions, okay, involved in complex 4, CuA, then cytochrome A3 and then copper B, okay, Cub. So these are different ions, basically complexes in the enzymes, and that cytochrome A3 will transfer the protons and electron basically to the last electron acceptor, that is oxygen. So last electron acceptor है and it will give rise to water formation, okay, H2O formation, right? And during this also process 2 protons are pumped outside. Okay, you can see here 2 protons are pumped outside. बेसिकली यहाँ पे कैसे दिखाया है, यहाँ पे ब्लैक एरो भी दिखाया है फॉर द क्विनोन साइकिल, राइट. देन दिस दे हैव शोन, ये जो साइटोक्रोम C है यहाँ से यहाँ मूव करेगा to transfer the protons, okay, the water is formed. Okay, both same pathways but different diagrams. For more clarity I have added here, right? The whole pathway of this respiratory chain we have seen in this slide, okay. This much is also sufficient. Additional point about complex 3 you should note that यहाँ पे Q cycle चलता है, okay, and you should read this by your side. It is nothing, just a QH2 जो यूबिक्विनॉल है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एंड लास्ट में अगेन यूबिक्विनॉन इज रीजनरेटेड, राइट. सेम हियर also नीचे भी you will see there is formation of different quinine products. So this is a stage 1 and this is a stage 2. just understand carefully. जो ये है Q नीचे था उससे QH2 regenerate हुआ है and from this QH2 Q is regenerated. Okay, so just nothing, it is just transfer of electron. So ऐसे oxidized and reduced products will be formed as complex 3 का नाम ही है oxidoreductase, right? तो complex 3 का और एक स्पेशलिटी है,
It is having Resk iron sulfur cluster or complex. बेसिकली Resk iron sulfur cluster का स्पेशलिटी है उधर हिस्टीडीन अमीनो एसिड इन्वॉल्व है. हिस्टीडीन अमीनो एसिड इन्वॉल्व है. जो बाकी के आयन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं ना ऑन द प्रोटीन, उसमें सिस्टीन इन्वॉल्व होता है, राइट, सिस्टीन. बट इन दिस कॉम्प्लेक्स 3 हिस्टीडीन अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व. तो इसका नाम दिया है रिस्के आयन सल्फर क्लस्टर, राइट. जस्ट नोट दिस. अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ना, तो हियर वी आर सीइंग एटीपी सिंथेसिस. ओके, एटीपी सिंथेसिस. अभी क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आईएमएस में पंप हुए, राइट. अभी क्या होगा, यहाँ पे एटीपी सिंथेस प्रोटीन है, इस कॉम्प्लेक्स 5 बेसिकली F0 F1 particles we can see here. यहाँ से 4H plus again they will come inside and that energy is used for production of ATP. Okay, so ADP PI से ATP formation होगा. Okay, I will just mark ATP here because that is the important product, right? So that this is known as oxidative phosphorylation. मतलब ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है to give rise for ATP. Okay, so you will see here proton motive force, very important term I will highlight. ये जो proton motive force है ना, इसमें क्या है basically, two things are there. First is chemical potential. मतलब जो chemical potential है वो different है across the membrane, right. मैट्रिक्स में अलग, IMS में अलग. as well as electrical potential. मतलब दोनों ग्रेडियंट्स केमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डिफरेंट है. ओके, यू कैन सी केमिकल में क्या होगा, इनसाइड इज अल्कलाइन एंड इलेक्ट्रिकल में इनसाइड इज नेगेटिव, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज that is electrical and on the basis of chemical property it is alkaline, right, and minus charge electrical. तो ये दोनों कंबाइन करके it gives rise to proton motive force which is driving the ATP synthesis. Okay, so this is known as chemiosmotic theory of ATP synthesis. Okay, बस इतना ही हमें याद रखना है. H plus is high on the IMS side and H plus is low on the matrix side. So this gives rise to gradient, right. Chemical gradient अलग है as well as electrical gradient अलग है. Proton gradient we say, and that gives rise to proton motive force which is then driving the ATP synthesis. You will see here, see the ATPs. ATP synthase this is called more properly, जो ADP plus PI से ATP formation करेगा and 4H plus are released. So this enzyme is basically called complex 5 or ATP synthase. Okay, इसमें two components हैं, F0 and F1, right. F0 जो है और O you can say this is for oligomycin. Oligomycin से ये इनिबिट होता है F0 पार्टिकल, राइट. F1 जो है
मेन एटीपी सिंथेसिस का काम करता है. गॉट इट? तो एज आई सेड, इसको प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, राइट? बट इसे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, आई विल राइट हियर, इलेक्ट्रोकेमिकल gradient. About this respiratory chain, just remember, तो ये complex 1 है and complex 3 and complex 4 form a respirosome. Respirosome. बेसिकली ये जो 3 प्रोटीन्स है विदाउट कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. ओके, सुपर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 फॉर्म सुपर कॉम्प्लेक्सेस, राइट, इन मैमल्स बेसिकली. एंड ईस्ट में सिर्फ कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. ओके, सो इन ईस्ट only complex 3 and complex 4 form the supercomplex and not the complex 1. But in mammals, complex 1, complex 3 and complex 4 form the supercomplex. Now let's see the numerical part. Okay, numerical part of this whole process. जो 4H plus है ना, इससे 1 ATP प्रोड्यूस होता है. ओके, तो total basically we saw that complex 1, complex 3 and complex 4 प्रोटॉन्स को पंप करते हैं, राइट? दिस 4H plus 4H plus एंड यहाँ पे 2H plus. तो टोटल 10 ATPs, 10H plus है, सॉरी, नॉट ATP, राइट? तो यहाँ पे ATP कितने बनेंगे? इफ दिस इज गिविंग राइज टू 1 ATP, राइट, this is giving rise to 1 ATP, this is also giving rise to 1 ATP, this will give rise to 0.5 ATP. So in terms of ATP, 2.5 ATP are produced from the single cycle of ATC, right? Basically जो starting का product है that is NADH, right? One NADH. So that's one NADH से 2.5 ATP बनता है, right? Previously I told you, just remember this. But why this is seen? Basically it's related to this cycle. Okay, this is how it is related. One NADH से 2.5 ATP बनता है, and this is how it is seen. Because जो starting product है वो NADH है of this cycle, right? Electron transport chain, and thus one FADH 2 is equal to 1.5 ATP. 1.5 means what? 6H plus, right? 6H plus. Okay, so ये part अभी याद रखना है. What else? And this is of ATP yield from complete oxidation of glucose. Complete oxidation, combining glycolysis, then pyruvate oxidation, then Krebs cycle. The total yield is 30 to 32. Okay, 30 or 32 ATPs are produced overall from combining all the cycles. So जो cellular respiration का total yield, we can say cellular respiration 30 to 32 ATPs produced. Very important. Okay, and हर एक cycle में हमने देखा है how the ATPs are formed.
नाउ इनिबिटर्स, बेसिकली इनिबिटर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये साइकिल को इनिबिट करते हैं, और रेगुलेटर्स आल्सो वी कैन से दिस इज द ऑर्डर, एंड ये ऑर्डर का सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए इनिबिटर्स को यूज किया था, राइट, एंड दैट helped us to determine the sequence of electron transfer. Okay, so NADH से क्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनिबिट करने वाला है रोटेनोन. ओके, देन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 इनिबिट करने वाला है एंटीमाइसिन ए. एंड जो लास्ट है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनिबिट करेगा, दैट इज साइनाइड. ओके, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. गॉट इट? Here also there are inhibitors. You can see here agents that interfere with oxidative phosphorylation. Okay, I will not take much time because this can be a huge video. So just remember this because question यहाँ से straight away आते हैं exams में. Okay, so make a screenshot of this slides, whatever I am giving you. It will help you answer questions. It may be any exam, right? This also again slide. You can see here यहाँ पे ATP synthesis रेड वाले लाइन से दिखाया है, and black is with inhibitors added. So how the variations are seen, you will see that यहाँ पे uncoupling हुई है. Uncoupling means what? There is no ATP synthesis, but electron transfer will continue, right, without the formation of ATP. These charts also are used as it is in the questions, right, and हमें बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई करो, like this. So here cyanide is there. After adding cyanide, this is seen. After adding succinate, this thing happens. मतलब ये तो नॉर्मल है जो दिखा है रेड में, बट व्हेन अदर थिंग्स आर यूज्ड, inhibitors or regulators basically, so the variation is seen in the graph. Got it? One more diagram, reaction coordinate diagram है for ATP synthase and for a more typical enzyme. I just added because do note they can pick graph as it is in the exams. So this is for a typical enzyme, you can see, right, enzyme substrate and complex बनता है and then product. Here ATP synthase you will see multiple things. First ADP plus PI, then enzyme plus ADP plus PI, then enzyme plus ATP, and then ATP in solution. Okay, this thing is also important because question यहाँ से आता है. Hypoxia is what? Low oxygen. अभी हमने देखा जो टर्मिनल एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है. So this cycle is important for regulating the homeostasis of a body, right? तो अगर ये साइकिल डिस्टर्ब है या ऑक्सीजन कम है तो ये पूरा होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब करेगा, राइट? तो लेट्स सी दिस इज द हाइपोक्सिया. तो हाइपोक्सिया में E1 का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, राइट, एंड व्हेन दिस इज इंक्रीज अदर थिंग्स आर इंक्रीज लाइक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स. ओके, पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा, lactate dehydrogenase is increased, PDH kinase is increased. Okay, so all pathways will be speed up as well as यहाँ पे protease increase हुआ है, right? Just note what things are happening. These things are increased. यहाँ पे arrow दिया है, pathway में क्या होता है वो दिया है. Okay, ATP भी increase होगा बहुत सारा,
production of ATP by glycolysis. So just read this. Okay, this is basically what one important major factor ये सब regulate कर रहा है, that is HIF1, hypoxia inducible factor. Now this is again of a uncoupling protein, UCP, uncoupling protein. Basically mitochondria का role as a thermogenesis. Thermogenesis means what? Heat generation. Okay, heat generation means what? यहाँ पे ना ATP production नहीं होता. Okay, no ATP production. ठीक, no ATP production. ATP production नहीं होता. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो एनर्जी होती है ना, that energy is used to generate the heat here. Okay, so ये जो है ना चीज, seen in brown adipose tissue, bad brown adipose tissue. अभी इसका कलर ब्राउन क्यों है? Because it is having high number of mitochondria present in high amount. अभी न्यूबॉर्न्स में भी ये होता है ज़्यादा, which is important to keep them warm. Okay, so न्यूबॉर्न्स में जो warmness है, that is retained by this thing. Okay, so thus this is important, right? So इसमें uncoupling protein involved है जो प्रोटॉन को अंदर लाएगा C. Instead of ATP synthesis, this will bring down and it will generate the heat. Okay, मतलब जो एनर्जी से ATP synthesis होती है, that same energy is used for production of ATP. So this is the alternative route for protons to re-enter the mitochondrial matrix, right? अभी यहाँ पे क्या होता है, fertile cycle भी है, in which creatine is phosphorylated by creatine kinase, जो यहाँ पे दिख रहा है. Okay, creatine kinase से creatine का phosphorylation होता है तो phosphocreatine using ATP and producing ADP transported by ATP ADP carrier. Right, ये ATP ADP carrier है. TK भी ATP को यूज कर रहा है for phosphorylation of creatinine and ये ADP regenerate करके again this will go here. See how the whole cycle is taking place. ये ADP again F1 के पास जाके ATP बनेगा. ATP again this will come outside. So this is all how this is interrelated. Right, just understand properly. Okay, so this is all about the oxidative phosphorylation. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.